So children, again, we have bought the asset, but now the date is not April 1st. The date is October 1st. What's the journal entry for purchase of asset? Asset account debit to bank. And if it is machine, the Bank. entry will be machine account debit to bank. Had it been the ledger of bank, what posting we would have done? By machine, but we are not preparing that. In machine account, what we'll write, children? To bank account. The date would be 1st October. The year which starts in April 16 would certainly end when, children? 31st March only. So on the credit side, the date would be 31st March. Have we used the asset for complete 1 year? No, we have been using it only for 6 months, half year. What is the journal entry for charging depreciation? Depreciation account debit to machine. Had it been depreciation's ledger, what posting we could have done? To machine, but वो तो हम बना ही नहीं रहे. In machine account, what we can write? By depreciation. The real story starts now, children. Depreciation is calculated with the use of same formula, PRT upon 100, where P is the value of asset, and it's how much, children? 3 lakh. What is so called the rate of depreciation given in the question to us, children? 10%. So 10%. 10 by 100. Time period from 1st October to 31st March is how many months, children? 6 months. So the formula PRT upon 100 is the standard formula which gives the value which is assumed to be for 1 year. The person who made it, had he been saying नहीं इससे 6 महीने की वैल्यू निकलेगी तो हम डबल करते. So the person who made this took standard T as 12 months, but we have to calculate for how many months, children? So अगर ये 6 months के लिए calculate करेंगे तो कैसे? Formula 12 months का है, 1 month के लिए divided by 12, 6 months के लिए multiplied by 6. Let's apply this mathematics. 0 0 becomes 0, 6 1s and 6 2s are 12, 2 1s are 2, 15s are 30, 3 more zeros. How much, children? Remember, this is the depreciation amount only for first year, but thereafter you are going to use the asset for full year. क्या then to 15,000 हो जाएगा? तब थोड़ा होगा. So it's just like that. You went to the bank and deposited some money on 1st October. On 31st March, when bank closes its books of accounts, will they be giving you full year's interest? They kept your money only for 6 months. So they are supposed to pay you the interest only for, but next year, your money is kept there for whole 12 months. So you'll be getting money for whole 12 months. Understanding? जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन किया क्लास 5th में, डिट्टो वैसे ही करना है. लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड, चलो. Logic understood? चलिए. So we'll be putting the value of depreciation, how much? 15,000. For your convenience, you can copy this calculation. Children, which side sounds short? Credit side. By what amount? 2,85,000. So we'll be putting on the credit side by balance carried down 285, and debit side, children, again the traditional way of balancing, to balance brought down 2,85,000. Is this heard well? Children, the year which starts on 1st April 2017 would certainly end when? Year starts on 1st April 2017 would end when? 31st March 18. Again, we'll charge depreciation. But now, have we used the asset, children, for only 6 months? No. Now we have been using it for how many months, children? 12 months. 12 months. So for 6 months, it's 15,000. For 12 months also it will remain same. क्यों सर, आपने तो बोला था depreciation remains same every year. पूरी बात सुनिए ना, depreciation remains same every year. अर्थ पे जो ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है. जुपिटर पे अगर आप कल को पढ़ने जाएंगे चैप्टर, तो टीचर दूसरी तरह से कैलकुलेट कराएगा. वहां पे ईयर 12 मंथ्स का नहीं होता. तो डोंट कंप्लेन मी सर, प्लीज रिफंड माय फीस, आपने गलत पढ़ा दिया सर. आप 12 मंथ बोल रहे ना, टीचर कह रहा है 165 मंथ्स होता है.
तो ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता रहता है. तो दिस चैप्टर व्हाटसोएवर आई एम टीचिंग यू इज वैलिड ओनली फॉर अर्थ. सो चिल्ड्रन 15,000 तो हाफ ईयर का था, फुल ईयर का 30,000. Understood this? So depreciation under this method remains same every year. पिछली बार तो था ही 6 months का. Heard well? Put it quickly. Put it quickly. Again, children, which side sounds short? Credit side. By what amount? 2,55,000. And then we'll show the totals on both sides. And after the total, children, we'll have what? Two balance brought down. 255. Now every year it will be 30, 30, 30 and so on. Is it very difficult? Why? We are doing it for every year now. ना पहले 6 months हो गया, अब तो 12 months के लिए asset use हो रहा है, तो last में 6 months क्यों होगा? 3 years ending on 31st March 2020 लिखा है ना. ये थोड़ा लिखा है कि ईयर स्टार्ट अगर अक्टूबर में हो रहा है तो खत्म सितंबर में होगा. द एंड ऑफ द ईयर, ये तो वही बात हो गई. द सेशन ऑफ द स्कूल स्टार्टेड ऑन April 1st, क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम April 4th. किसी बच्चे का एडमिशन हुआ जुलाई में, वो क्या बोलेगा? या तो मैं 3 महीने की फीस नहीं दूंगा, और अगर जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ है तो मेरा फाइनल एग्जाम अगले साल जून में होगा, मार्च में नहीं दूंगा एग्जाम. समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं होता. चलिए. So children, again, the year which starts on 1st April 18 would certainly end when? 31st March 19. What is the journal entry for charging depreciation? Machine. In machine account, what we'll write? By depreciation. And the value would be same, 30,000. Which side sounds short still? Credit side. What is 255 minus 30? 225. So is it anything new that I am teaching you? Not at all. The total would be 255 and carried down की value ही brought down में आएगी. It's 225. So theoretically we have done 3 years, practically 3 years theoretically and practically 2.5. पहला साल तो 6 महीने का था, but bookkeeping record के लिए वो भी 1 साल माना जाता है. Again children, the year which ends on 1st April 19 जो start हुआ, it will end when? 31st March 20. And again by depreciation the same way, 30,000. Which side sounds short? Which side sounds short? Great. By what amount? 195. Very good. And then we'll show the total 225. After the total, what we'll be doing? Brought down. 195. Understood this? So 4 years हो गए children? नहीं सर, 3.5 ही हुआ है. Practically 3.5, theoretically 4 हो गए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ईयर एंडिंग 31st March 2020 तक ही आपको ड्रॉ करना है. सो चिल्ड्रन, अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से हटके रियल लाइफ बताता हूं. अगर आप किसी भी बिजनेस में एसेट अकाउंट देखो चिल्ड्रन, दिस रेड पोर्शन, this green portion, this blue one, then this brown portion, will all these be appearing in any business's books of accounts in 1 year only? Answer children, no. आप 2.5 hours की मूवी देखते हैं, एक बच्चा दौड़ते दौड़ते 5 मिनट के अंदर बड़ा हो जाता है. Is he or she an alien? That's a real life, very different from real life. The lecture which is taken in 1 hour 10 minutes every alternate day children, क्या उसकी रिकॉर्डिंग भी 1 hour 10 minutes की होती है? No, 70 minutes की रिकॉर्डिंग हार्डली आपको 25 to 30 minutes में कवर अप हो जाती है. रेसिपी यूट्यूब पे सिखाई जाती है 15 minutes के अंदर. Got it clear? पालक पनीर इज प्रिपेयर्ड, घर में बनता है 15 minutes में. एंड इफ यू से टू योर मम्मी, वो यूट्यूब वाला तो 15 मिनट बनाता है, व्हाट मम्मा वुड से,
जाओ उसी से खा लो जाके। तो काफी चीजें प्री प्रिपेयर्ड होती हैं, आई रिपीट, काफी चीजें प्री प्रिपेयर्ड होती हैं। तो मेनी थिंग्स व्हेन आई टीच, गॉट इट क्लियर, आपको यूट्यूब वीडियो पे थोड़े कम टाइम पे नजर आती है, बट इसमें तो सर इतना ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हम कुछ बातों को रिमूव कर देते हैं, तभी वो रिकॉर्डिंग में कंटेंट नहीं है। तो सिमिलरली व्हेन यू हैपन टू ओपन एनी बिजनेसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको ये वाला डेटा 16-17 में नजर आएगा। अगले ईयर का रजिस्टर ओपन करेंगे तो ये ग्रीन बॉक्स नजर आएगा। नेक्स्ट ईयर रजिस्टर ओपन करेंगे तो ब्लू बॉक्स। नेक्स्ट ईयर रजिस्टर यूल ओपन तो यूल गेट व्हाट, ब्राउन बॉक्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो सर हमको तो 4 इयर्स एक साथ करा दिया गया है। आपका रियल लाइफ है, रियलिटी में इट इज रियल लाइफ। तो रियलिटी में अपने पापा के बिजनेस का लेजर एसेट अकाउंट ओपन जब आप करेंगे, यू विल ओनली फाइंड रेड और ग्रीन और ब्लू और ब्राउन। आपको एक ही कोई मिलेगा, सब नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट की अप्रोच और रियल बिजनेस की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। अंडरस्टूड चलो? तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। तो बटर पनीर मसाला कैन बी मेड ऑन अ यूट्यूब चैनल विद इन 17 मिनट 23 सेकेंड्स, बट रियलिटी में 1.5 घंटा लगता है सब्जी बनने में। अंडरस्टैंडिंग? दाल मखनी बनने में यूट्यूब में 12 मिनट लगते हैं, रियलिटी में 6 घंटा लगता है। पहले 4 घंटे दाल भिगो के रखनी पड़ती है, यूट्यूब में 4 घंटे दाल भीगी हुई दिखा रहा है आपको चैनल पे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? चलिए, अगेन चिल्ड्रन, नाउ द असेट इज बॉट। वेरी सेम क्वेश्चन। अब असेट को आपने कब खरीदा? 1 जुलाई। आई रिपीट, कब खरीदा? 1 जुलाई। तो प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क, कि आप 1 जुलाई वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे, और मैं इसको अगली क्लास में टेकअप करूंगा। समझ में आ गया? तो 1 जुलाई को अगर आपने एसेट खरीदा बच्चों, ईयर एंड्स ऑन सेम 31 मार्च, हैव यू यूज्ड इट फॉर 12 months? नो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. So depreciation will also be charged for every year, only in the first year. Then it will be for complete 12, 12, 12, 12, 12. Understood children? You can even solve it after class and PDF बना के मेरे को भेज दीजिएगा, तो I'll see to it. वैसे ऐसा होमवर्क कुछ ही लोग याद रख पाते हैं, बिकॉज मैनी आर सफरिंग फ्रॉम HTML। सर HTML सुना था, ये HTML क्या होता है? जब से HTML आ गया है तब से STML आ गया है। HTML is decoded as हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स www चला के बन गए हैं गबलू, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, HTML। तो लेट्स सी हु ऑल आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज।